Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes. I am Surbhi Gupta, and in these videos we study economics basics but from Tamil Nadu board book. But I always clear it up in the beginning itself that the book doesn't matter. If you're interested in knowing the basics of economics, if you're in class 11th, class 12th, preparing for any entrance exam, or be it anywhere you are and you're just interested in the concepts, that I feel this series is for you all. And today's video is going to be a little long, so I would say that if you are going to get this feeling that this is a longer video, so go grab your snacks and then keep watching, because we are talking about one of the major macroeconomic indicators today, which is unemployment. And also we'll discuss different types of unemployment in today's video. So I'll quickly share the screen, and also I would really want you all to hit that subscribe button. Hardly would take 10 seconds of yours, but means the world to me. And I always forget to say this in the beginning of the video, so I hope that you are not forgetting to subscribe though. So please subscribe. And yeah, thank you. I'll just share the screen and we'll begin with the video. So okay, I'll just quickly go to the topic that we are going to do today. Hold on. All these things we are going to cover in the upcoming video. Today we are going to do this unemployment and its types. Okay, different types of unemployment. What are the different types, and examples also. So this is all we are going to do. I'll quickly share the pen and start writing. So what is unemployment? In the last video we saw what is full employment. Now let's see what is unemployment. Unemployment is basically a problem faced when there are people who are willing to work and able to work but not find suitable jobs. So for example, if I am somebody who's willing to work and who's able to work, and I am open to work, that means I'm part of the workforce but I'm not getting job. So if I'm part of the workforce is people, or your force of people who are ready to work. So if you call them to work from tomorrow onwards, they'll be ready. So that is your workforce. So they are able to work, they are willing to work, but they are not getting jobs, they are not able to find jobs, which means unsuitable jobs, I would say. It's not like that I am a PhD scholar and I am waiting for some good job, and you are saying that sandwich wale ke paas to aapke liye naukri hai. So suitable job also really matters. Just examples. Okay. So yeah, while formulating policies to solve the problem of unemployment in India, for instance, we need to distinguish between nature of unemployment in rural areas and in urban areas in India, because India is categorized into rural versus urban. So we need to understand the nature of the unemployment. If unemployment is a broad term, but there are different types of unemployments, there's different nature of unemployment varying from region to region. So we need to classify between rural and urban. Okay. And yeah, the major feature of rural unemployment is the existence of unemployment in the form of disguised unemployment. Like there's a land and only 3 people are required on this land, but there are 6 people working. So rest of the 3 people, they are not adding anything in the output. The output, ये 3 लोग भी मिलके 100 यूनिट्स ही बना रहे हैं, और ये 3 लोग आ जाएंगे प्लस होके तो भी 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होंगी. They are not adding any value, which means there's disguised unemployment. Again, there's a seasonal unemployment in rural India कि certain season में काम है, कुछ season में काम नहीं है. ठीक है. Structural open unemployment exists in urban areas. Okay, so due to urbanization, a large number of people move from rural areas to urban areas, and ये जो migration होती है from rural to urban areas increases size of labor force in urban areas. That means more people are there in the urban area and they are sitting idle. So they are willing to work, they are able to work, but वो खाली बैठे हैं काम से. रूरल से urban में आ तो गए, ठीक है, गांव से शहर आ गए एंड जॉब ढूंढ रहे हैं पर जॉब मिल नहीं रही है. तो अर्बन एरिया में वर्कफोर्स तो ज्यादा हो गई ना शहर में, एड्स टू ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स. सो पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट थी, अब गांव से भी आप वहां आ गए तो और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं. In developing countries like India, the nature of unemployment is different from that of developed countries. ठीक है. इंडिया में अलग है, इंडिया भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, even though we are trying our best कि 2047 ईयर तक विकसित भारत हो और हम डेवलप नेशन हो जाएं, क्योंकि 2047 में हमें इंडिपेंडेंस लिए हुए 100 years हो जाएंगे. ठीक है. इन डेवलप्ड कंट्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इज प्योरली टेम्पररी.
unemployment is purely temporary or cyclical or frictional. But in developing countries, it's largely structural unemployment, which is due to slow rate of capital formation. There's no, there's very slow rate of capital formation in developing countries, because of which we face structural unemployment. So these are different types of unemployments which you can see on your screen. There's cyclical unemployment, seasonal unemployment, frictional, educated unemployment, technical, structural, and disguised. All these unemployment types we are going to cover in today's video. First is cyclical unemployment. I'll just change the color of the pen because I'm not liking blue, even though blue is the color which I've started liking. But yeah. Okay, so this unemployment exists. We are talking of the cyclical unemployment, and this unemployment exists during the downturn phase of trade cycle. So there's a downturn phase of trade cycle in economy. In a business cycle, during the period of recession and depression, income and output falls, leading to widespread unemployment. So business cycle कैसे होती है? ऐसे 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 चलती है. ठीक है, ये रिसेशन फेज होता है जब ग्रोथ से नीचे जा रही होती है, फिर नीचे चली जाती है, डिप्रेशन फेज होता है, और जब ये वाला फेज आता है बिजनेस साइकिल में, ट्रेड साइकिल में, तो क्या होता है, आपका आउटपुट फॉल होता है, इनकम फॉल होती है, और जब इनकम प्रोड्यूसर को नहीं मिल रही, आउटपुट नहीं आ रहा प्रॉपर, तो वो और ज्यादा लोगों को निकाल देते हैं, ले ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी क्योर्ड बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. अगर आप पैसा दे दोगे इकोनॉमी में, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास पैसा आ जाएगा, अगर मनी आ जाएगा, so they want to expand their output, and to expand the output they would hire more people, and then the cyclical unemployment can be better and can be corrected. Okay, then we'll go to seasonal unemployment. This type of unemployment occurs during certain seasons of the year in agriculture and agro-based industries like sugar industries. Production activities are carried out only in some season. These industries offer employment only during the season of the year. Therefore, people may remain unemployed during off-season. And seasonal unemployment happens from demand side also. For example, ice cream industry, holiday resorts, and you can say umbrella जो बेचते हैं या जो स्वेटर विंटर वेयर बेचते हैं. ठीक है, सो ऑल दिस इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट की एक सर्टन सीजन, फेस्टिविटीज पे कह लो, जो भी डेकोरेशन का सामान बेचता है, सो दे गेट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग फेस्टिविटीज, एंड रेस्ट ऑफ द सीजन दे डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट. सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग. Then you have frictional unemployment. What is frictional? Is temporary. So frictional arises due to imbalance between supply of labor and demand for labor. This is because immobility of the labor, lack of necessary skills, breakdown of machinery, shortage of raw material. अगर ये सब हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए आउटपुट नहीं प्रोड्यूस होगा, तो कुछ टाइम के लिए जो आपकी लेबर है ये अनएम्प्लॉयड होगी, बट ये टेम्पररी होगी, इसलिए इसको फ्रिक्शनल कहते हैं. When persons lose jobs and are in search of new job, they have to wait for some time. This is the period of joblessness called frictional unemployment. So if I'm leaving my job to find a new job, and the time gap between my earlier job and my new job, that time period is frictional unemployment. So I'm unemployed, but frictional unemployment है ये. ठीक है. Then educated unemployment क्या होती है? Sometimes educated people are underemployed or unemployed. ठीक है. When qualification does not match the job, faulty education system, lack of employable skills, mass educated student turnout, and preference for white collar jobs are highly responsible for educated unemployment. So I've recently shared a PhD article on my channel, and आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगा अभी, आज ही शायद आया है मॉर्निंग में, या कल तक आ जाएगा वो आर्टिकल. तो उसमें आप देखोगे हमने पीएचडी की बात की है कि इंडिया में कैसे आप पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एनकरेज कर सकते हो एनवायरनमेंट, एंड यू कैन प्रोबेबली क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर यू आर बूस्टिंग अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर. वाई? बिकॉज पीएचडी तो कर लेते हैं, उसमें उसको करने में आपके 3 to 5 years कहीं नहीं गए होते, एंड बाय द टाइम आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं इंडिया में, यू टर्न आउट टू बी 28 to 30 year old मैन और वुमेन, एंड तब तक आपका जो एक नेचर होता है कि अगर आप एम्प्लॉयड होते तो आप कितना अर्न कर चुके होते, वो चीज रह जाती है. हमारी कंट्री में जो भी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर करता है या जो भी पीएचडी करने जाता है, सो आइडली दे आर not wasting their ages, like the essential time period of earning, but at the same time they are not adding personal development and value कुछ भी add हो रही हो, but इनमें आप corporate wise जितना earn कर सकते थे उतना तो आपने नहीं किया ना. So there is educated unemployment I feel, and आधे टाइम लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, किसी ने मास्टर्स करके भी वो जॉब ले लेते हैं जो ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं, नहीं मिलती जॉब्स, तो ये भी होता है. ठीक है.
Then there is technical unemployment. Modern technology being capital intensive requires less laborers. Okay, and क्योंकि less labor चाहिए and contributes to technological unemployment. क्या होती है, एक बहुत ही example chat GPT का ले लो. तो chat GPT आने से a lot of edtech firms में पहले स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा हायर होते थे एंड ये आपका क्रिएट जो भी क्रिएटिंग का काम होता था इसके लिए स्पेशल ह्यूमन माइंड चाहिए होता था, बट चैट जीपीटी या एआई के आने से क्या हो गया है कि ये जो ले ऑफ हुए हैं या हायरिंग कम हुई है कंटेंट क्रिएटर्स की, बिकॉज अगर आपको प्रॉम्प्ट करना आता है, इफ यू आर देयर इज अ टर्म प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड अगर आपको प्रॉपरली प्रॉम्प्ट करना आता है चैट जीपीटी को बता के समझा के कि यार मुझे ये चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको वो चीज सेकंड्स में दे देगा, जिसकी रिसर्च में एक ह्यूमन लगता था 1 वीक और मोर. तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी. ओके, nowadays invention and innovation lead to adoption of new techniques, thereby existing workers are retrenched. Okay, labor saving devices are responsible for technological unemployment. What is this labor saving device? For us, in our example, it's chat gpt or AI, artificial intelligence. Okay, then there's structural unemployment. What is structural unemployment? Structural unemployment is due to drastic change in structure of society. अब society का पूरा structure ही change हो गया है, ठीक है. Lack of demand for the product or shift in demand for other products cause this type of unemployment. For example, अब इसका example देखते हैं. Rise in demand for mobile phones has adversely affected the demand for cameras, which is very true. So recently I also thought of buying a camera for so most of you who don't know, I also have a personal channel, so I was trying to get hands on camera. I was just researching about the cameras, not even wanted it, because I feel cameras are more tedious and उनको संभालना करना डेटा है वो मुझे फोन उससे कहीं ज्यादा इजी लगता है. So I record my videos on my phone itself. I don't need any camera. So obviously ये जब जितने आपके आईफोन आ रहे हैं तो आपको लगता है ना कि कैमरा तो सिर्फ कैमरा होगा, बट फोन तो फिर आपके मल्टीपर्पज सॉल्व करेगा. कहीं भी हैंड दिया निकाला, यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग. सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इट. ओके, सो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है. टेप रिकॉर्डर्स अब नहीं आते. हमारे टाइम में कैसेट डलती थी, वो कैसेट का वो निकल जाता था तो फिंगर से घुमा के, आई थिंक जिसने देखा होगा, सो वो कैसेट प्रॉपर होती थी. इन कैसेट्स आती थी या डीवीडीज आती थी मूवी की. उसके बाद सीडीज आने लगी, पर अभी भी अब तो लैपटॉप्स में ये हाल हो गया है कि सीडी ड्राइव वो सिस्टम ही नहीं होता. यू डोंट नीड अ सीडी, रादर यू डोंट इवन नीड पेन ड्राइव्स दीस डेज. वो कितना एडवांसमेंट हो गया है कि अब यूं बस ब्लूटूथ कनेक्ट विदाउट वायर. सो यू सी दिस माइक which I have. There's no wire attached to this mic, or there's no plug into this mic. This is how we are upgrading. So upgrade करने के चक्कर में जो हमारी ऐसी चीजें हैं जो हम पहले यूज करते थे उससे तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, उसकी डिमांड तो खत्म हो गई ना. अब टाइपराइटर्स जो थे उनकी डिमांड तो खत्म हो गई ना. उन लोगों को तो पता ही नहीं आगे क्या करना है. उन्होंने तो सीखी फटाफट फटाफट टाइपिंग सीख. वो टाइपिंग की टक 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 मशीन होती थी एंड वो फटाफट से टाइप करते थे. जो जितना फास्ट टाइप करेगा उसको वो जॉब मिल जाती थी. अब वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो थिंग्स हैव चेंज. दिस इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. और यू कैन से अनदर एग्जांपल वुड बी कि the way Japan, South Korea, Taiwan, all these countries shifted from agriculture to industrialization and to industries. So ये all together उन्होंने अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, ठीक है. तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई इनिशियली वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी. So this kind of unemployment results from massive and deep-rooted changes in economic structure. Okay, then there's disguised unemployment. Needless to say, I've already explained कि जिस लैंड पे अगर 2 लोगों की जरूरत पड़ रही है, 2 लोग भी मिलके 100 यूनिट्स मे बी 1 kg वीट क्रॉप ग्रो कर रहा है, एंड अगर 4 लोग भी आ जाते हैं तो भी उतना ही ग्रो हो रहा है, वैल्यू एड नहीं हो रही. तो इसका मतलब एक लैंड पे रिक्वायरमेंट 2 ही लोगों की. अगर जबरदस्ती, इसका बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, किचन में आपकी मॉम खाना बना रही है, घर में गेस्ट आ गए, तो किचन में आपकी मॉम गर्म कर रही है, सर्व कर रही है, मे बी शी नीड्स ओनली 1 हेल्पिंग हैंड, और किचन में इतनी स्पेस भी नहीं है, ठीक है. भीड़ लगाने का फायदा नहीं है. 2 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 10 लोग और आ जाते हैं, हम हेल्प करें, उससे वैल्यू ऐड नहीं होती, बस किचन में भीड़ बढ़ जाती है. सो इट्स वेरी वेग एग्जाम्पल, बट या आई थिंक डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निकल आएंगी. सो ओके, अ पर्सन इज सेड टू बी डिस्गाइज्डली unemployed if his contribution to output is less than what he can produce by working for normal hours per day. Okay, so in this situation marginal productivity is 0 या less. marginal productivity क्या होती है कि एक और लेबर आने से सिर्फ उस लेबर ने कितना ऐड किया है, मार्जिनल, ठीक है. जैसे 2 लेबर थी,
वो मिलके 100 यूनिट्स ग्रो कर रही थी। तो अगर 1 लेबर एक और आ जाता है, जो थर्ड लेबरर आता है, उसके होने से भी 100 ही है, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की थर्ड लेबर के ऐड होने से 0 आउटपुट आया है, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो गई है। और या फिर लेस हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है कभी कभी, कि वो जगह ले रहा है फालतू की, वो काम नहीं कर रहा उतना, तो आउटपुट और कम होता जा रहा है तीसरे के आने से। सो दिस वुड बी योर disguised unemployment. And with that, I think we have come to an end of this video. इतनी भी लंबी नहीं हुई जितना मैंने सोचा था, but yeah, I really hope you found it useful in some or the other way. And what is unemployment and what are different types of unemployment is something which is very hit among students. और आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर कोई ये देखने आता ही है। सो आई वुड से अगर आपको कुछ नहीं समझ आया या किसी भी बेस्ट तरीका होता है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स समझने का, वो ये नहीं होता कि आप वीडियो देख लो या रीड कर लो। हर टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, डिस्गाइज्ड हो गई, स्ट्रक्चरल हो गई, फ्रिक्शनल हो गई, एजुकेटेड हो गई, टेक्निकल हो गई, वट एवर काइंड ऑफ साइक्लिकल हो गई, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उनमें अपना एक क्रिएट किया हुआ एग्जाम्पल फिट कर दो। जस्ट फिट इन द एग्जाम्पल, क्रिएट वन एग्जाम्पल। जैसे डिस्गाइज्ड में मैंने आपको किचन का एग्जाम्पल दे दिया रैंडमली, ठीक है। सो आप अपना एक एग्जाम्पल क्रिएट करोगे ना, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं वो चीज, बिकॉज वो आपने खुद क्रिएट करी है, राइट। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बट स्टिल अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है, आप चाहते हो मैं और एग्जाम्पल्स दूं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे देना, एंड आई वुड हैप्पीली डू सो। एंड अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे लिख सकते हो। टेलीग्राम लिंक जो है ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन में ही है। वहां पे मैं डेली न्यूज़पेपर्स भी शेयर करती हूँ, और जो जो कुछ भी अपडेट्स हो रहा है, जो भी है वहां पे सब शेयर होता है। सो यू हैप्पीली प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप। एंड टुमारो विल स्टार्ट विद क्लासिकल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेटर विल डू केंजियन ऑल्सो, फिर एडीएस सब करेंगे हम, डोंट वरी। But for the day, I think we'll just wrap up. And I would say just keep smiling, stay happy, create a positive aura all around yourself, and don't get this flu, and don't get yourself being hampered by the weather transition as I am today. So I would say ki thoda healthy raho and keep smiling, keep practicing. I'll see you tomorrow. Take care.